top of one. Now, the Uddhav Thackeray faction of the Shiv Sena held a meeting to decide on the Supreme Court, moving to Supreme Court, in fact, with that entire election symbol issue and also the new name for the party. The meeting was held with Shiv Sena leaders, legal experts and also lawyers from the Supreme Court till about 3 a.m. last night. Now, after this meeting, 3 proposals have been prepared regarding the name and the election symbol, and the name will be stamped in the meeting to be held in Mumbai today. All this is coming to light through sources. This is what we are learning, that there was a meeting that was convened. It lasted till about the wee hours of the morning, and it had all the Sena leaders of the Uddhav Thackeray faction, also legal experts and lawyers from the Supreme Court, who wanted to go ahead with 3 proposals and the preparations regarding the name and the election symbol that they are supposed to carry forward when it comes to the Uddhav faction of the Shiv Sena. My colleague Anshul now joins me on the broadcast. Anshul, can you take our viewers through more details of what really came out of this meeting? We are told that this lasted till the wee hours of the morning, and there is another one that we're waiting for. So yes, this meeting that happened late last night, in this actually it was discussed that they are going to move the Supreme Court after a decision came in from the Election Commission to freeze the symbol of that bow and arrow of Shiv Sena to either of the parties. So yes, the Uddhav Thackeray faction is now absolutely adamant to make sure that they get the symbol because before this very crucial Andheri East by-polls that is due in the next few weeks. So yes, this was initially decided. They had a meeting with the battery of lawyers of the Shiv Sena, and they have now decided to knock the doors of the Supreme Court. So it is very likely that tomorrow we could see that the Shiv Sena reaching out to the Supreme Court and asking them to put a stay on that order that has been given by the Election Commission of India. But yes, experts who are very privy to this conversation say that they are very aware of the fact that it is there are very few chances that they might get some relief out of the Supreme Court, because the Supreme Court had already told the Election Commission of India to take a decision in this matter, and when the Election Commission of India is in its due process to take a decision in this matter, they cannot again go to the Supreme Court and ask for a relief. So yes, it remains to be seen how does the Supreme Court respond to the entire thing. But as of now, the primary allegation or the primary argument of the Uddhav Thackeray faction is going to be that they have the requisite support, and all this is being done on the behest of the BJP to make sure that there is no opponent to the BJP in the upcoming by-polls in Andheri, and that is the reason why the Eknath Shinde camp is trying to forge its documents and make sure and give its document to the Election Commission of India, claiming that they have the actual majority when that is not the case. So it remains to be seen how does the Supreme Court respond to this. But yes, currently in this entire situation, the Eknath Shinde camp definitely has the upper hand in this entire fight that is going on, Priya. All right, Anshul, stay on with me. Let me take this across to our colleague Prashant Leela, who is joining us from the Maharashtra Southern in Mumbai. Prashant, we're talking about 3 proposals. क्या डिस्कस हुआ है, क्या तय हुआ है? ये मीटिंग जो अभी होनी है, अंडरवे है या खत्म हो गई है? आप क्या जानकारी दे सकते हैं? खासकर ये जो मीटिंग थी वो लास्ट नाइट 3 बजे तक चली है, जिसमें अनिल देसाई थे, उसके बाद में काफ़ी सारे लीगल एक्सपर्ट और एक जो लीगल टीम है शिवसेना ठाकरे गठ की वो थी, और उसमें 3 प्रपोजल देने की बात हुई है। जो 3 नामों का प्रपोजल अभी इलेक्शन कमीशन को दिया गया है, जिसमें सबसे पहला जो चिन्ह दिया गया है वो उगवता सूर्य, जिसे राइजिंग सन कहा जाता है, वो दिया गया है। दूसरा मशाल, और तीसरा जो है वो त्रिशूल दिया गया है। लेकिन इनमें से जो पहले क्रम के दिया है वो राइजिंग सन के ऊपर काफ़ी सारा डिस्कशन चल रहा है। उसी को लेके एक मुंबई में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसमें सारे उपनेता, नेता और सेक्रेटरी और सभी उसमें सहभागी होने वाले हैं। उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में मीटिंग होने वाली है, और साथ में देखा गया है कि जो प्रपोजल है ये अभी उद्धव ठाकरे गठ की ओर से दिया गया है, लेकिन अभी भी शिंदे गठ की ओर से कोई भी प्रपोजल नाम को लेके या साथ में चुनाव चिन्ह को लेके जो सिंबल है, इलेक्शन सिंबल, उसको लेके दिया गया नहीं। हो सकता है वो कल दोपहर तक 1 बजे तक ये प्रपोजल इलेक्शन कमीशन को दे। बीच में जैसे अंशुल ने कहा है, ये दोनों पार्टी फिर से एक बार दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन कर सकती है, लेकिन उसका भी रिजल्ट जिस तरह से बताया जा रहा है कि फिर से वो जो बॉल आएगी वो बॉल सीधा इलेक्शन कमीशन के ही कोर्ट में जाएगी, तो उसी को लेकर प्रपोजल के लेकर डिस्कशन हुआ है, और हो सकता है तीनों चिन्हों में से एक चिन्ह के ऊपर, एक सिंबल के ऊपर जल्दी फैसला होने की उम्मीद है।
जी प्रशांत, जो बातें आप हमें बता रहे हैं, स्पेशली ये 3 इलेक्शन सिंबल्स को लेके, ऑप्शंस की अगर बात करें उद्धव फैक्शन के पास वो कितना है? क्योंकि डिलिबरेशंस हुई हैं उनकी बैटरी ऑफ लॉयर्स के साथ, उनकी लीगल टीम के साथ। क्या लग रहा है, विल दे लूज आउट ऑन द बो एंड एरो सिंबल, या फिर ये एक इंटरिम है? शिंदे वर्सेस ठाकरे गट की लड़ाई, ग्रुप की लड़ाई इलेक्शन कमीशन में हो रही है। और अभी जो सिंबल सीज किया गया है, जो उसके ऊपर जो रिजर्व किया गया है सिंबल, उसको लेके जो धनुष बाण था उसको लेके अभी क्या कुछ वक्त के लिए, जब तक ये पूरी सुनवाई खत्म नहीं होती है तब तक वो सीज रहने वाला है। और उसके दरमियान जो चुनाव है, खासकर जो बायपोलिंग होने वाला है अंधेरी ईस्ट को लेके, जो 166 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का है, तो उसी को उसमें ये यूज किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी और शिंदे जो एक गुट है अभी, जो खुद को महायुति कहती है, युति कहते हैं, उनका प्रयास है कि ये सुनवाई है लंबी दौर तक चले और इसी बीच में बीएमसी इलेक्शन जो खासकर दिसंबर में होने की उम्मीद है वो भी खत्म हो जाए। तो उस वक्त में शिवसेना या जो उद्धव ठाकरे गट है या उद्धव ठाकरे का ग्रुप है, उसे काफी बड़ा जिस तरह से धक्का मिल सकता है, क्योंकि सिंबल को लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़ी तकलीफ निर्माण हो सकती है। और उसी को लेके ये बड़ी बैटल अभी चल रही है। लेकिन इस बैटल में तो अभी धनुष्यबाण दोनों ने खोया है, या शिंदे हो या फिर वो खासकर उद्धव ठाकरे का ग्रुप हो। Absolutely. Prashant, thank you so much for joining us with all the latest that's coming out of not just Maharashtra but also the national capital, where these deliberations have come to fore, and the Election Commission, of course, has frozen the bow and arrow symbol for both the factions of the Shiv Sena. Let's